Hello and welcome to BQ Prime. You're watching IPO Adda, and my company in focus today is Signature Global. It's a real estate company operating in the space of affordable and lower middle income housing based out of Delhi National Capital Region. And joining me is Pradeep Aggarwal, who is the chairman of the company, and Rajat, who is the CEO of the company. The company is coming out with an IPO which opens on September 28th, closes on 22nd. Price between 366 to 385. A fresh issue of 602 crores and OFS of 127 crores. It's roughly coming to 13.48% of the post-issue equity capital, and the OFS is primarily a sale by investor IFC in the IPO. Ms. Aggarwal, thank you very much for joining us on BQ Prime. Let me begin with asking the basic question. You're raising 602 odd crores. What is going to be the use of proceeds for this amount? तो सजीव जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। जो ये प्रोसीड प्राइमरी 603 करोड़ की जा रही है, इसमें से लगभग 463 करोड़ के नियर अबाउट जो है वो डेट रीपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है वो वर्किंग कैपिटल और जो ग्रोथ फंडिंग है उसके लिए यूटिलाइज किया जाएगा। Give me a sense of Rajat, the business that you are in. How many ongoing projects are there? In which region and at what stage? Sure. So thanks again from my side as well for inviting us to the program. So see, we are a fairly young company, established just about 10 years ago. 2014 was when we launched our first project in Gurugram under the affordable housing policy of the government. And the journey has been, not that long, but fairly impressive. We've seen, a lot of support from our customers during this journey. That has led to strong, growth of the company over the last, decade. So as of today, see, we focus on affordable and mid-income housing projects. Gurugram is our primary market. In our local market, we've created a very strong brand name, led by very clinical, execution of projects, good quality of projects which we've delivered. So a very strong, word of mouth exists for, which has helped us in creating good brand for the company. Like any other consumer business, we have a fairly strong distribution network along with our own in-house, team, which helps us in achieving fast-paced sales. Also, we have a very strong in-house, construction capability. We try to use best available technologies available to do the construction. So, some of these factors have fueled our growth, and we feel this is like the right strategy when going forward. Mr. Aggarwal, you've been growing at a fast pace, 1,553 crores at the end of FY23. But you're still, loss making at the on the profit after tax level. When do we see your operations, getting profitable? So सजीद, the thing is that कि एक्चुअली जो कंपनी है बहुत यंगर है, जैसा रजत ने भी बताया कि हमने जो ग्रोथ किया है वो रैपिडली लास्ट 9 ईयर्स में किया है। क्या होता है, आप बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो जो आपके एजीएनडे हैं, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग कॉस्ट है, वो आपके पीएनएल पे हिट करती है। लेकिन अब जब आप प्रोजेक्ट लेवल की बात करते हैं तो हर प्रोजेक्ट लेवल पर आपको एक प्रॉफिट मार्जिन प्रॉपरली नजर आता है। वो हमने अपने डीआरएचपी में भी शो किया है। सो ऑफ कोर्स आज की डेट में पीएनएल पे लॉस जरूर नजर आता है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये आपको बैलेंस शीट्स पे नजर आएगा। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके हर प्रोजेक्ट में एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो हर प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं आप? मैंने डीआरएचपी में भी जो नंबर दिया है वो लगभग जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें 24% का प्रॉफिट मार्जिन हम शो कर रहे हैं, एंड 30% जो मिड इनकम हाउसिंग है, लोअर मिड इनकम हाउसिंग, उसमें हम 30% का प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि 24 और 30% का प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हैं, so ये प्रॉफिट मार्जिन क्या बैक एंडेड होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑन कंप्लीशन एंड ओसी
मिलने के बाद, या you can recognize some of the revenues as you complete or meet certain milestones? देखिए बेसिक मॉडल क्या है कि जब आप ओसी रिसीव करते हैं उसके बाद जब आप 95% पैसा अचीव कर लेते हैं उसके बाद ही आप प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, बिकॉज इससे बिजनेस मॉडल क्योंकि कंप्लीटेड कॉस्ट मेथड के ऊपर ये चलता है। क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले वक्त में पूरे होने वाले हैं, तो आने वाले जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारे ईयर्स आएंगे उसके अंदर जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो P&L पे प्रॉफिट नजर आएगा। Rajat, it's interesting because you work under two major policies, which is affordable housing policy of Haryana, and the other one is the central government led policy, which is Deen Dayal Jan Awas Yojana. In one of them, the OC comes at the beginning, and then the completion certificate comes. And in Deen Dayal, the completion comes first, and the OC comes at the end. So how do you recognize this kind of revenues going forward, and which are the projects which are now pending getting OC or completion certificates under the various policies? So, see, under both the policies, the fundamental principle, the accounting principle is that once you've handed over the apartment to the customer, that's when the accounting policy says that the risk and reward with regard to that particular product can appear in the profit and loss account. Which means OC, right? In this Which case. means I would say even a step further than OC, because after getting occupation certificate, till the time you don't hand it over and you've not significantly collected receipts from the customers, you can't recognize those profits. So just for instance, you complete a project on 30th of March, but let's say you hand it over on 5th of April, hypothetically, the accounting recognition will shift to the year within which that 5th April exists, just as an analogy, no specifics to this. So it's actually basis handing over of units. Our endeavor usually is to complete our projects within good span of time. We've given enough instances in our offer document wherein, we've tried to deliver projects within 4 and 5 years, despite going through the COVID period. And in Delhi NCR also, we've seen a lot of, NGT related ban on construction. So despite these challenges, we've completed our projects within the span of 4 to 5 years and multiple such projects. So going forward, we do see that more and more projects which are under development, a lot of mid-income projects, which are under development are getting completed. And that's a very promising situation because our gross profit margins on mid-income projects tend to be higher than affordable projects. प्रदीप जी, ये बताइए कि FY21 से 22 में भी आप we saw an aberration because आपके कुछ completion of projects got flowed into the next financial year, and FY22 में आ गए थे, FY21 से FY22 में आ गए थे. FY23 में कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पुश हो गए हैं FY24 में? तो देखिए हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है कि जो स्पीडली कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि हमारी कोर स्ट्रेंथ ही है कि हमने इसे बिल्कुल फैक्ट्री मॉडल के ऊपर डिजाइन किया हुआ है. सो आप ये देखिए इट्स ए प्रोसेस. कई बार क्या होता है कि जब आप एक्चुअल ग्राउंड पर जाते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आपको आती हैं, जैसे रजत ने बताया कि जो एनजीटी है उसका बैन जब लगता है तो वो उसका आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो 1 मंथ के लिए लग रहा है या वो 2 मंथ के लिए लग रहा है. सो वो जरूर कुछ ना कुछ आगे पीछे होता है, लेकिन बेसिकली आप इंटेंट देखिए कंपनी का, इट्स वेरी क्लियर कि जल्दी से जल्दी बनाकर जो हमारा एस्पिरेशनल बायर है उसको डिलीवर करना है. Mr. Aggarwal, I agree with that part of it, but you're coming to the markets and markets would like to have more clarity on the numbers. Right. So, इसलिए I'm asking, are there what is the quantum of projects which are completed by you but pending OC and completion certificate? सो सजीत, मेरा फिर से इसके ऊपर आपको यही आंसर होगा क्योंकि इट्स इन प्रोसेस. आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि वो आज या कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बता सकते अच्छा. हैं. अगर आप वैल्यू नहीं बता सकते तो प्रोजेक्ट्स अच्छा, बता सकते हैं. जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, सो हाँ. टोटल जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 17 मिलियन है जो हमारा ऑनगोइंग चल रहा है. तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर एक, क्योंकि ओसी एक ऐसा पार्ट है वो अगर कुछ भी पोर्शन पूरा होता है 0.5 मिलियन 1 मिलियन तो वो पार्शली आती रहती है. सो टोटल जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो 17 मिलियन के नियर अबाउट.
और उसमें से कितने हैं जिसमें ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मींस कंप्लीटेड हैं आपके प्रोजेक्ट्स या ऑनगोइंग मींस अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन? कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वाले कितने प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें से? जो हम डिलीवर कर चुके हैं टोटल। नहीं, जो करने वाले हैं या कर सकते हैं आप आगे जाके? ओके, सो मैंने कहा जो ये 17 मिलियन है, ये 17 का 17 मिलियन आने वाले 1 साल में डिलीवर होना चाहिए, 1 से 1.5 साल में, ये हमारी एक्सपिरेशन। Okay. Rajat, we've seen a lot of volatility in policies also, right? The affordable housing policy of Haryana. While at some point in time it has given you the much more benefit of higher price which you can charge, but also in some of the policies like the steel plus four floors that has been put on abeyance. Many of the projects have been cancelled. Where are we on this, and how do you manage this kind of policy flip flop which is happening? So see, Sujit, in terms of framework, as far as affordable housing is concerned, for the high-rise apartments, there's a particular policy which is called the affordable housing policy. We started our work within this policy and tasted a lot of success, in the initial years while working in a focused manner only under the affordable housing policy. Starting year 2017, we, started working into, Deen Dayal Janavas Yojana as well. But if you talk of the framework within the mid-income, housing market, there are multiple policies within the state of Haryana within which one can work. So yes, government has been actively, improvising on these policies. But if you look at the current situation, we are working across the spectrum, across various policies which the government has provided for mid-income housing. I like the term improvising that you used. But Mr. Aggarwal, yeah, what has been the kind of average price realization that you get per square feet from these projects? सो देखिए, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो जो उसका प्राइस है वो फिक्स है, वो 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। एंड जो मिड इनकम की बात करें तो मिड इनकम का आज का जो गुरुग्राम का प्राइस है वो लगभग 8,000 से 9,000 के बीच में वेरी करता है, डिपेंड ऑन लोकेशंस। So is the pricing completely dependent on market conditions या गवर्नमेंट की कुछ नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से आप प्राइस में कैप रहेंगे? सो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो प्राइस है वो फिक्स है, वो बाय गवर्नमेंट है। लेकिन जब मिड इनकम की बात करते हैं तो वो जो प्राइस है वो मार्केट डिटरमिन है, जैसी डिमांड है मार्केट में। लेकिन हमारा जो मेन एम है, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं, मेजरली आप देखिए फोकसली जो कंपनी है मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है, तो हम जो भी अपने प्राइजेस रखते हैं वो मिडिल क्लास की पॉकेट को अलाउ करे, ऐसी जरूर एस्पिरेशन रखते हैं कि हम उन नंबर्स को जरूर अचीव करें कि कम से कम हम उनके जो फर्स्ट जो डेवलपर्स हैं उनकी लिस्ट में आ सकें और वो हमारी टेबल तक पहुंच सकें। और मिनिमम टिकट साइज कितना होता है फॉर फ्लैट्स का, फ्रॉम अफोर्डेबल टू मिड इनकम? देखिए, अफोर्डेबल के अंदर जो प्राइस रेंज है वो लगभग 25 से 30 लाख रुपीस है। एंड उसके बाद जो प्राइस है वो ऑन एन एवरेज मिड इनकम में 1.5 करोड़ के नियर अबाउट का प्राइस जाता है। Yeah, Rajat, just give me a sense of how the market is, especially the Gurugram market and Sohana, where you have these are two markets where you have maximum projects. How pricing has been there, and is there a way you're looking at expanding your market beyond the two cities as of now? So the market situation is very buoyant, across Gurgaon. So what's happened over the last decade is that a lot of good things happened in terms of infrastructure developments, whether it's the golf course road which got developed, the National Highway Authority developed this Sona elevated corridor. The DMIC got operational, which is starting just from south of Gurugram, where exactly, our Sona projects are in that vicinity. There's this fold growth which has happened in the office space, leasing in the local market. Whereas if you look at the housing side, over the last 8 to 10 years, the kind of supply which would have been added didn't really kind of come up. And there could be multiple reasons why it wouldn't be the right forum to discuss that.
So right now, while there's a lot of demand, we feel that supply is still kind of constrained. It's not keeping up with the kind of demand which is there. We've even disclosed in our offer document the strong response which we've often received on the projects which we launch. We managed to sell these projects within a short span of its launch. So the market is very buoyant. The per square foot realizations have gone up over the last 2 years, especially post the pandemic, situation. So it's quite a favorable market situation by and large. प्रदीप जी, ये जो मार्केट प्राइसिंग है, जैसे आपके अफोर्डेबल प्राइसिंग हाउसिंग के लिए है 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, इसमें क्या ईयरली या पीरियोडिकली इंक्रीमेंट होता है और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स किया जा रहा है। सो इसके अंदर कोई ईयरली इंक्रीमेंटल नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का एम है कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए, सो जैसे जैसे कोई भी प्राइस इम्पैक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज या लैंड प्राइसेस में, तो गवर्नमेंट ऑलवेज इसके ऊपर एक रिव्यू रखती है कि अगर कोई भी प्राइस में ऐसा चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन टर्म्स ऑफ लैंड प्राइसेस, डेफिनेटली वो उसको देख रहे होते हैं। और लास्ट आप देखिए जो 5,000 का प्राइस है, उन्होंने लास्ट 3 महीने पहले ही इंक्रीज किया है, जो इससे पहले वो लगभग 4,200 रुपीज का था। सो ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्टिव एंड अफोर्डेबल हाउसिंग पर से और मिड इनकम हाउसिंग पर से जो गवर्नमेंट का रोल है बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज इंटेंट क्या है कि आप गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम एक पूरा जॉब का हब है। आप ये देखिए कि पूरा आईटी हब है, ऑटोमोबाइल का हब है, बेस्ट आईबी स्कूल्स हैं वहां पर, हेल्थ केयर का बहुत बड़ा हब है। सो ऐसे में एक जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा वहां पैदा हो रही हैं। तो ऐसे में घरों की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कहीं ना कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है कि आप कितने भी घर बना लें वहां आप उस सप्लाई को पूरा नहीं कर सकते। प्रदीप जी, अभी ये बात तो सही कहा कि एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग सिटी है गुरुग्राम, बट रीसेंट सोशल अनरेस्ट जो हुआ था उसके वजह से काफी सवाल भी उठे हैं कि ऑफिस में भी काफी सवाल उठे हैं अबाउट जो पीस एंड वहां पर होना चाहिए उसके बारे में। तो उससे क्या आपके डिमांड में फर्क पड़ता है? देखिए मुझे लगता है वो बहुत ही ऐसी सिंपल सी चीज थी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हुई और वो खत्म हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर गुरुग्राम या सोना रीजन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे देखने को नहीं मिला। और आप डिमांड की बात करें तो डिमांड में तो 0.001% भी नहीं नजर आया है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव हुआ कि मुझे गुरुग्राम या सोना रीजन में कोई भी फ्लैट नहीं लेना, ऐसा कोई व्यू मुझे भी नजर नहीं आया। आपकी प्रॉपर्टीज में कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं? यस, सो देयर इज ये क्या है कि हर पॉलिसी के अंदर एक मॉडल फ्रेमवर्क है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट ने बनाया है कि जो आपका सोसाइटी कंपोनेंट होगा उसमें 8% ऑफ द सोसाइटी आप कमर्शियल कंपोनेंट बना सकते हैं, तो वो एक कमर्शियल कंपोनेंट है। एक जो भी मिड इनकम हाउसिंग है जिसे हम डीडीजेवाई स्कीम कह रहे हैं उसमें 4% कमर्शियल कंपोनेंट होता है। तो ये दोनों के दोनों जो है कमर्शियल कंपोनेंट, क्योंकि ये मॉम एंड पॉप स्टोर हैं जो डेली नीड्स की आइटम के लिए बनते हैं, सो वो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं ब्रेड एंड बटर भी है जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं दे रहा हो। पर उसमें देयर इज नो प्राइस कैप टू Yes, इट, राइट? उसके ऊपर कोई भी प्राइस कैप नहीं है, इट्स फ्री टू सेल। I was looking at your sales numbers, and it said that nearly 17% of your homes are unsold, while more than 30% is something which is unsold in commercial. तो ये कमर्शियल अपॉर्चुनिटी कितनी है आपके लिए और वो कितना बफर देता है? आपने बताया मोटा मोटा कि 24% आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है अफोर्डेबल से और 30% आता है मिड लोअर इनकम ग्रुप से। तो ये कितना बफर देता है इसमें? सो आप ये देखिए कि अगर हम 24% प्रॉफिट मार्जिन अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में कमा रहे हैं तो उसका लगभग 50% जो प्रॉफिट है वो हमारा कमर्शियल कंपोनेंट से ही आता है। बिकॉज एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो नॉट फाइनेंशियली सब्सिडाइज कर रही है कि जिससे वो सोसाइटीज वाइबल हो सके और डेवलपर्स उन्हें बना सके। Rajat, you are in Gurugram and Sohana today, and affordable. Are you looking at cities beyond that, beyond NCR, any other region, Mumbai metropolitan region, where also where we have seen a lot of affordable housing projects coming at the outskirts and suburbs coming up.
is there a plan to expand your reach beyond the NCR or Gurugram? Means go out of Gurugram and to other cities. So as of now, we see a lot of opportunity within Gurugram and surrounding areas. So, for instance, it's Sohna, Manesar, these cities we've done a lot of work and we've been fairly successful with within this staying within the strategy of focusing on the Gurugram market. So our foreseeable future, the focus will remain in our existing markets. Give me a sense of your debt on your books. On a gross level, it's around 1700 odd crores. You're planning to pay off some of the debts through this IPO, but what would be the total gross debt after you have paid off everything? So our net debt as of 31st March was less than 1100 crores. There were a significant amount of cash and cash equivalents sitting with us on the same date, and usually the cash liquidity in the company is good. We do intend to reduce debt once we receive the proceeds from this issue. What is this debt primarily being taken? Is it for acquiring land banks and others, or is it for projects? Because for projects, you will be selling pre-sales and you will be getting the cash which you can use for construction, right? It's a mix of both. It is some of this land would be for land acquisition, some would be for construction purposes, some would be for working capital needs. So it's a mix of it. Our primary lenders include HDFC Capital, Kotak Mahindra, NBFC arm of theirs, IndusInd Bank, ICICI Bank. So we're working with all top pedigree lenders in the country, and we're very happy to be. प्रदीप जी ये बताइए कि ये प्रॉफिटेबिलिटी का जो है, आप मार्केट्स में आ रहे हैं, रियल एस्टेट में आप प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके फाइनेंशियल्स में वो दिखना चाहिए, राइट? मीन्स अगर नहीं दिखेगा तो वो स्ट्रीट बोलेगी कि आप बोल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी हर प्रोजेक्ट में 24 से 30% है, पर आपके बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, तो वो कब तक आने की उम्मीद है? और ये एक क्या नाम सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल रहेगा ये वेंचर? सजीत जी, क्या है, जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं बहुत पर्टिकुलर एक एक चीज के ऊपर बहुत माइन्यूटली वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन है वो इन हाउस है। जो कॉस्ट है हमारे ऊपर वो कोई भी ऐसा कोई वेरी ही नहीं हो सकता कि एक्सेप्ट कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा इधर उधर वेरी ना करें तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कहा, बहुत यंग कंपनी है, बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एवरी ईयर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन बिग नंबर। सो आई थिंक सो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में डेफिनेटली वो प्रॉफिट शो होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट प्रॉफिट तो वो है ही, क्योंकि हम बहुत माइन्यूटली उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले जितने भी ईयर्स होंगे वो प्रॉफिटेबल होने ही चाहिए। And Gentlemen, yeah, Rajat. I would like to add one thing. So even if you look at the last financial year numbers, so see, pre-sales were more than 3,400 crores. That gives, so the organization's working to achieve that particular scale of pre-sales. Whereas if you look at the revenue recognition, it was only, above 1,500 odd crores. So, this gap also explains that, while it's a much larger organization at play, the revenue recognition and cost recognition is only happening for projects which got completed, which were equivalent to 1,500 odd crores in terms of revenue. On that 1,500 odd crores of revenue, we've shown profitability at the project level. So we've shown an adjusted gross profit, which is in excess of 400 odd crores. We've even shown an adjusted EBITDA, which is in excess of 200 odd crores. The adjustment only being to the finance cost, because, usually finance cost completely should be, below the EBITDA level. So, we've displayed a project level profitability, in the previous year itself in both affordable and mid-income projects. But this, it's more of an accounting mechanism that, on completion only we are recognizing profits. And the second factor is the gap between the current scale of business, which is displayed by pre-sales, vis-a-vis the completion of business. And if you'll really get back, see, any construction activity or any project takes about 3 to 4 years, 4.5 years for completion. I was about to come we are to a young that, company, and we are a young company. As we see multiple such cycles, getting completed,
And at some stage, some convergence happening between the pre-sales number and the revenue recognition, project level profitability should transpire into the bottom line. Yeah, so my question was exactly that, because even if your pre-sales are 3,400 crores, the recognition will happen in the 3 to 4 years, and you need to have a consistent pre-sales of that and execution capability to meet that kind of number there. And the second one is on the finance cost. We've seen, Rajat, that a lot of developers underwent a tough time because of the financing and the debt they had on the books. So that's the reason I was asking the path to profitability, because you are in a very hyper competitive NCR region. So I would suggest you also look at the operating surplus, which got created. So for instance, last year, before investment into any land, which is, again, technically an inventory for us, but, an high expense item, we earned, free cash flow, operating cash flow of about 691 crores. So, that shows the strength in the business that, while we are doing sales, we are also collecting money at a good pace. We collected more than 1,900 crores in the previous year, and we had an operating, positive operating cash flow of 691 crores. So that gives us the ability to, run the business with good amount of liquidity. However, we are conscious of the fact that being a development company, it's always good to have lower levels of debt, and that's why part of the proceeds of this issuance are being used for, reducing the leverage levels. You spoke about the operating cash flows, but cash from all operating activities was negative for last 3 years. So do you see going forward that getting positive as well? So cash from all activities was negative. That's because, we've invested quite a lot of money in land acquisitions in the last year, particularly. That investment happened because there's a lot of opportunity, there's a lot of growth which is, available in the market. Projects getting sold at a good pace, the prices of our inventories moving up. So a lot of investment happened into land, in the previous year, and that's why, which is a discretional expense in some So manner. you expect that to turn positive going forward? See, we are very sure that we want to continue in the same market. We want to have a focused approach. We've always, worked in more like a product model rather than a project model. We've tried to churn our projects at a good pace. So if you look at, any of our land acquisitions till the time those projects are launched, on an average, it's not taken more than 18 months. So if you run this business in more of, manufacturing model, the way even Pradeep ji was saying, you don't tend to make mistakes, which may have occurred in the, by some developers in the past. In addition, Sujit, the good thing is that after RERA got introduced, in a lot of development companies in general, the discipline levels, have improved because, a bulk of the money gets parked into the RERA accounts and can be used only for construction purposes. So that's a very positive change for any, development company, and it inculcates, discipline by default. So this is just an industry remark, I'm not saying specific for anyone. Point taken. I was just talking about the real estate in general and the lessons that we have learned from the past. So that was the reason. Gentlemen, it was a pleasure talking to you today. Your IPO is opening on September 28th and closes on September 22nd. Price between 366 and 385. It's a fresh issue of 602 crores and OFS of 127 crores. Thank you very much for joining today on IPO Adda on BQ Prime. Thank you very much. Thank you.